Hi, I welcome you all for Vamsi's Golden Series for IAS. Environment is one of very important module. I divide environment into 5 parts. Introduction, wetlands, biodiversity, climate, environmental laws, movements, organizations and current updates. On day 1, we are going to learn wetlands. To make it simple, I further divide these wetlands into 3 subparts: introduction to wetlands, coral reefs and mangroves. Let's start with introduction to wetlands. What we are going to discuss in this? First we will understand the definition of wetland. ये कोई prelims का कोई काम का नहीं है, but still we will see it. Then we will understand various types of wetlands. What are benefits of wetlands? Why wetlands are getting depleted? What are the causes and what should be the measures taken? What is eutrophication? Very important, Ramsar Convention on Wetlands, then Montreux Record, Wetland International, National Wetland Conservation Program and important wetlands in India. So these are 10 concepts we are going to understand in this topic. I request you not to make any running notes. You do not require it. First, what is the definition of wetland? Let us start with the definition of wetland. You do not require this, it is not going to be asked in prelims. I am just telling, just listen and forget. This is a marshland, this is a fenland, this is a marshland, fenland, this is a kind of peatland. These are the different kinds of lands. Now, wetlands are areas of marsh, fen, peatland or water, whether natural or artificial, permanent or temporary, with water, that is static or flowing, fresh, brackish or salt, including areas of marine water, the depth of which at low tide does not exceed 6 meters. So what he is trying to say, they can be marshland or fenland or peatland or water, any kind of land, whether they could be natural or artificial, whether they are permanent or temporary. Maybe throughout the year there could be water or maybe for few days. Water could be static, flowing. It could be fresh water, brackish water or salt water. Even including marine areas, but in that case the depth at low tide should not exceed 6 meters. This is the definition of wetland given at the time of Ramsar Convention. What is Ramsar Convention? We will see in आगे देखेंगे. So you don't try to remember this definition. So hope you know what is a wetland in general, right? You can make it out from the picture. Just forget this. What are various types of wetlands? We can divide these wetlands broadly into inland and coastal or marine. Some examples of inland wetlands are lakes, ponds, waterlogged, swamps and marshes, reservoirs, etc. No need to remember them. Just एक idea के लिए मैं बता रहा हूँ, कहीं नहीं पूछने वाला है. Similarly, marine or coastal wetlands, some examples are estuaries. What are estuaries and all? What are creek, bay and all? हम geography में सीखेंगे. आप सिर्फ मुझे follow करिए. Don't worry what is this and all. Just listen and forget. Lagoon, creek, bay, gulf, mangroves, coral reefs. These are some examples of marine or coastal wetlands. Just no need to mug up, don't make a notes and don't try to read what is inland, what is marine, not required. आगे चलते रहेंगे तो आपको खुद समझ में आएंगे. No need to put separate effort for this. Okay, simply forget. Next we understand the benefits of wetlands. Some of the benefits include pollution control. Suppose when agricultural runoff or industrial pollution is coming, these wetlands absorb those pollutants. So pollution can be controlled. Storm and flood control. So at the time of storm, when floods come, so flood means what? When water want to go at a time, that is flood. So when there are wetlands, they will be filled first, so it can slow down the process. So flood can be controlled.
Similarly, it is a home for species. Many birds and all, they can, it is a habitat for those. Next, why? What are the causes for the depletion? If you see, from 1990 till date, almost 50% of wetlands in the world have depleted. Why? What are the reasons? Climate change. These are not to mug up. You see, any negative change you can include. Suppose अगर question आ भी लेता है, अगर if you ask which of the following action could deplete wetlands, any negative action you can take it. No need to remember them, because अगर यहाँ 4-5 हम देख भी ले, यही थोड़ी पूछेगा एग्जाम में. So common sense से हम आंसर करेंगे. No need to mug up these. Just एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ. Climate change. Waste disposal. If you can understand from pictures, right? If this way waste is being dumped, the wetland, the actual, what it has to do, its ecosystem service, it cannot perform. Similarly, illegal activities like sand mining and all. Construction of dams. Over construction of dams can disrupt the natural flow of water. So these are all something. Construction of dams is not a positive thing in environmental ways, but of course for agriculture and irrigation purpose it is required. Otherwise, environment purpose में बात करेंगे तो it is not correct, right? Next, what can be taken? What measures can be taken? Mitigation measures for the depletion of wetlands. Some measures I am suggesting, like survey and demarcation. Government can survey the wetlands and demarcate and can protect. Removal of encroachments. Eutrophication control. What is eutrophication? अभी देखेंगे. Eutrophication control. Creating awareness among people, etc. Till now what we have done is not required for you for exam point of view. अब से जो कर रहे हैं वे important है. First one, what is eutrophication? What is eutrophication? Very simple. You just need to understand 3 keywords. One is enrichment of an ecosystem, generally a water body. What does it mean? Suppose there is a pond. This is a pond. Now you put lot of fertilizers in agriculture. With the rain, all these have run off into this wetland, this pond. What do we call this? So those chemical nutrients are reaching this pond. That is called enrichment of this ecosystem, this pond ecosystem, with the chemical nutrients. Typically compounds containing nitrogen, phosphorus or both. So nitrogen, phosphorus, such chemical compounds have reached this pond. Step 1. Now what happened? That means it is oversupply of nutrients. Now these are nutrients, right? That's why you are putting them in agricultural fields. Nitrogen, phosphorus, like that. So they have reached this pond. So the pond has a lot of nutrients now. Now what happened? Which will help plants grow. So explosive growth of plants and algae happen in this pond, because you have given, means because of rain or some natural action, the agricultural runoff and all. So excess nutrients have reached this pond. Because of this, explosive growth of plants and algae happen. Step 2. Step 3. When they grow now, no problem. But when they die, they consume oxygen. In case of what we call decomposition, bacteria takes oxygen while the process of decomposition happens. So at the time of decomposition, they take oxygen. So they consume oxygen in the body of water. Then what happened? The oxygen in the water body decreases. So that situation is called hypoxia. That means lack of oxygen. So one is oversupply of nutrients. Second is explosive growth of algae and plants. Third is when they die, they consume water, oxygen in the water body. Then what happened? Hypoxia or lack of oxygen. That situation comes in the pond. Then what happened automatically? The aquatic life, like fish and all other frogs, whatever they are living in the pond, they do not get oxygen, sufficient oxygen, so they may die. So this is called eutrophication. So simply speaking, into 3 words: oversupply of nutrients, explosive growth of plants and algae,
When they die, they consume oxygen, and that situation is hypoxia, lack of oxygen. Then plant aquatic life may come to an end. Simple. Itna mind mein rakhiye, nothing more to worry. Okay. So let's summarize what all we have seen till now. First, we have seen the definition. It is a marsh, fen, peatland or water. Any kind of land. It could be natural or artificial. It could be permanent or temporary with water. That is static or flowing. All varieties, all cases he is explaining. Freshwater, brackish or salt water. Marine water also included, but at that case, at low tide, the depth should not exceed 6 meters. So this is the definition given at the time of Ramsar Convention. Next, what are various types? If you take inland wetlands, lakes, ponds, waterlogged, swamps, marshes, reservoirs, etc. are examples. And if you take coastal wetlands, estuaries, lagoon, creek, bay, gulf, mangroves, coral reefs, etc. are examples. What are benefits? They can control pollution, flood control, home for species, etc. What are the threats or what causes its depletion? Climate change, waste disposal, construction of dams, etc. What could be mitigation measures? Of course, illegal activities. Mitigation measures are awareness, survey and demarcation, removal of encroachments, etc. और भी 2-3 आप सजेस्ट कर सकते हैं. No need to remember them. अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा भी है तो आप देख के आंसर कर सकते हैं with common sense, right? So don't take it too seriously. Out of all this, anything important is there, that is eutrophication. Because he may ask what is eutrophication. So the keywords are oversupply of nutrients, explosive growth of algae and plants. When they die, consume oxygen. That situation is called hypoxia. So death of aquatic life. So this is all what we have seen till now. इसमें सिर्फ eutrophication is what I recommend you to remember. That you no need to mug up. You can understand. अब से ज्यादा important है Ramsar Convention on Wetlands. So there was a convention to protect these wetlands called Ramsar Convention. It is an intergovernmental treaty. It is not an NGO or anything. It is an intergovernmental treaty. You see, there will be two kinds of things. One is intergovernmental treaty or intergovernmental organizations. Second is NGOs. So this is intergovernmental treaty that provide framework for national action. कोई भी intergovernmental treaty यही करेगा. No need to remember specially for this. आगे कुछ भी और ऐसा intergovernmental treaty आएगा, same concept. Generally national action होता है और international cooperation होता है. तो कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी का ऐसा काम करेगा, नेशनल लेवल पे एक्शन लेना चाहिए नेशनल गवर्नमेंट एंड द इंटरनेशनल लेवल पे दे कोऑपरेट. ओके, बट दिस इज फॉर व्हाट? कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. यहां 3 कीवर्ड्स है, आपको याद रखना है. वन इज इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी, सेकंड इज नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, थर्ड इज वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. वे कहीं ये नहीं बोल रहा है वेटलैंड्स को यूज मत करो, यहां नहीं. कोई भी कन्वेंशन, कोई भी ऐसा ट्रीटी क्या बोलता है, वाइजली यूज करने को बोलता है और सस्टेनेबल यूज की बात करता है. ये नहीं बोलता है यूज कंप्लीटली मना नहीं करते हैं. ओके, सो 3 वर्ड्स: इंटरगवर्नमेंटल ट्रीटी, नेशनल एक्शन एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. बस इतना माइंड में रखिए रामसार में. वे मगअप मत करिए कितना पार्टीज इसका मेंबर्स है, कितना साइट्स है वगैरह, बट पार्टीज से तो बिल्कुल भूल जाइए. 169 पार्टीज, वे बिल्कुल याद मत रखने का जरूरत है, याद रखने की जरूरत नहीं है. बट नंबर ऑफ रामसार साइट्स, नो नीड टू एग्जैक्टली मगअप, बट यू सी एक रफली आइडिया होना चाहिए आपको. 2000 से ज्यादा है, क्योंकि आगे कुछ और आएगा. लाइक मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में 51 साइट्स है वर्ल्ड में. मैं आगे बताऊंगा आपको. कभी इंटरचेंज कर सकता है, लाइक नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन द वर्ल्ड और 51, ऐसा कुछ दिया होगा तो आपको इतना बताना चाहिए. नो, 51 कम है और ज्यादा है, इसका मतलब 51 गलत है, इतना पता चलेगा, आपका काम हो जाएगा. नो नीड टू मग अप द एग्जैक्टली 2231, बिकॉज दिस फिगर इज ऑल्सो नॉट फिक्स्ड. वे चेंज होता रहेगा. अगर नया और इंट्रोड्यूस करेगा इसमें तो इट में चेंज ऑल्सो, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस नंबर. बट आई नो दैट 2000 से ज्यादा है. नंबर ऑफ रामसार साइट्स इन इंडिया 26, इंडिया में 26 है.
What is the mission of this? No need to remember, just एक मेरा satisfaction के लिए मैं बता रहा हूँ. The conservation and wide use of all wetlands, वे already बता ही है आपको. Conservation and wide use of all wetlands through local and national action and international cooperation as a contribution towards achieving sustainable development throughout the world. So this is the conservation convention's mission, but don't mug up, simply forget this slide. There are 3 pillars under the convention. Again, no need to mug up. Just एक बार सुन के भूल जाइए. मैं continuation के लिए और आपको एक clarity देने के लिए मैं ये सब पढ़ा रहा हूँ. Otherwise आपको exam point of view में कोई काम का नहीं है. आप इसको याद रखने में time waste करेंगे तो it's waste of time. कोई फायदा नहीं है आपके लिए. Try to understand me. So, under 3 pillars of the convention, the contracting parties commit to work towards the wide use of all their wetlands. So, wide use के लिए काम करेगा. Second, designate suitable wetlands for the list of wetlands of international importance. यहां मैं इतना रिकमेंड करूंगा, wetlands of international importance is nothing but रामसर लिस्ट. कहीं वे रामसर लिस्ट के जगह ये वर्ड भी यूज कर सकता है एग्जाम में, wetlands of international importance, that is nothing but रामसर लिस्ट. That means 2231 sites in the world and 26 sites in India. So wetlands of international importance, ये वर्ड माइंड में रखिए. इसका सुटेबल वेटलैंड्स का कौन डिजिग्नेट करेगा? कंसर्न्ड नेशन. सपोज इंडिया में 26 वेटलैंड्स, किसने बताया इसको ये 26 इसमें डालने के लिए? इंडिया इन गवर्नमेंट शुड रिकमेंड, राइट? सो व्हाट आर द 3 पिलर्स? वन इज वाइड यूज, सेकंड इज डिजिग्नेट सुटेबल वेटलैंड्स, थर्ड इज कोऑपरेट इंटरनेशनली ऑन ट्रांसबाउंडरी वेटलैंड्स. इफ देयर इज एनी वेटलैंड विच इज ट्रांसबाउंडरी, विच इज occupying area in 2 countries, then those 2 countries should cooperate. So these are 3 pillars. You see, कहीं नहीं पूछने वाला which of the following is one of the 3 pillar of रामसर कन्वेंशन. आपको कोई काम का नहीं है, एक बार सुन लिया, ऐसा तो कॉमन सेंस से समझ में भी आ रहा है, मगअप करने की जरूरत नहीं है. नो नीड टू रिमेंबर, अंडरस्टैंड एंड फॉरगेट. The conference of parties meeting will be held once in every 3 years. याद रखने की कोई जरूरत नहीं. ये नहीं पूछेगा कितने साल में एक बार मिलता है, हमको क्या लेने देना है उससे. 3 साल में एक बार मिलता है. बट रिसेंटली मिला है 2015 में. 12th मीटिंग ऑफ COP was held in Uruguay 2015. I don't recommend ऐसा क्वेश्चन आएगा यूपीएससी में. स्टेट एग्जाम्स में आ सकता है, लेकिन 15 का अभी नहीं पूछेगा. अगर अभी अभी रिसेंटली मिला होगा तो मे भी छोटी एग्जाम्स में पूछ सकता है, यूपीएससी में तो बिल्कुल नहीं पूछेगा. सो डोंट वेस्ट योर टाइम इन रिमेंबरिंग. 2015 में लास्ट 12th COP हुआ है उरुग्वे में, देन अगेन 2018 में मिलेगा, बट हमको कोई इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है. वे याद रख लीजिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? 2 फरवरी. इतना याद रखिए, बिकॉज 1971 में जब वे मिला है रामसर में, दैट इज दे मेट ऑन 2 फरवरी. सो द कन्वेंशन वाज अडॉप्टेड on 2nd February 1971 in Ramsar. Ramsar is a city in Iran. Okay, but no need to mug up. ये वर्ल्ड मैप में ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, देखेंगे वहां. सो कंप्लीटली फॉरगेट. 2nd February वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, बस इतना माइंड में रखे. हर वेटलैंड डे पे एक थीम होता है. 2016 का थीम है वेटलैंड्स फॉर आवर फ्यूचर, सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स. Don't mug up this. This is what the theme of 2016. We remember 2017's. Maybe rare case में, especially in state exams, he might ask. So the theme for 2017 Wetlands Day was Wetlands for Disaster Risk Reduction. Wetlands for Disaster Risk Reduction is the theme for World Wetlands Day 2017. Sustainable livelihoods for 2016, Wetlands for Disaster Risk Reduction for 2017. बस इतना नोट करिए. So what all we have seen in Ramsar? What is Ramsar Convention? Intergovernmental treaty, national action and international cooperation, and conservation and wise use of wetlands and their resources. Then Ramsar sites, contracting parties are 169, no need to mug up. Wetlands of international importance, word mind में रखे, that is nothing but Ramsar site. 2231, no need to exactly remember, but एक rough idea होना चाहिए. And in India there are 26. What are 3 pillars? कोई काम का नहीं. One is wise use,
Second is designation of suitable wetlands. Third is international cooperation on transboundary wetlands. Then COP, it will be held once in 3 years, don't remember. And 12th COP recently held in 2015, that is in Uruguay. No need to remember. World Wetland Day is celebrated on 2nd February. 2016 theme was Wetlands for Our Future Sustainable Livelihoods. 2017 theme is Wetlands for Disaster Risk Reduction. So this is all about Ramsar, what you have to know. इतना आपको पता है, आपका एग्जाम आराम से आंसर कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछेगा नहीं. नो नीड टू वरी एट ऑल. इतना सिंपल कीवर्ड्स माइंड में रखें. See why I am saying, let us take a question which was asked in 2010 paper. India is a party to the Ramsar Convention and has declared many areas as Ramsar sites. Which of the following statement best describes as to how we should maintain these sites in the context of this convention? Okay. First one, keep all the sites completely inaccessible to man. See, what is the keyword that you get by looking at the question? The keyword is wise use, right? And now if you know the keyword, you can easily answer the questions. बहुत फनी लगेगा आपको. अगर आप कीवर्ड नहीं समझते हैं, कितना भी मगअप किया तो आपको मे बी एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है. Now you see how silly the options are. Option A, keep all the sites completely inaccessible to man so that they will not be exploited. Completely inaccessible, meaningless. Option B, conserve all the sites through ecosystem approach and permit tourism and recreation only. Actually the meaning wise use का मतलब you can do fishing and all other economic activity also, but in a sustainable manner. That was the meaning of that. So B is also wrong. C, conserve all the sites through ecosystem approach for a period of, you may not know what is ecosystem approach and all. No need to know also. Still you can answer. For a period without any exploitation with specific criteria and specific period for each site and then allow sustainable use of them for future generations. ऐसा तो हम कुछ देखा नहीं. ये बोल रहा है कि कुछ पीरियड के लिए, डिपेंड्स ऑन द साइट. कुछ साइट को 1 साल, कुछ साइट को 5 साल, ये कंप्लीटली दूर रखो, देन यू कैन यूज वाइज यूज, सस्टेनेबल यूज. दैट इज व्हाट ही इज सेइंग. ऐसा नहीं, अभी से सस्टेनेबल यूज कर सकते हैं हम. सो कंजर्व ऑल साइट्स थ्रू इकोसिस्टम अप्रोच एंड अलो देयर साइमल्टेनियस सस्टेनेबल यूज. द कीवर्ड इज हियर simultaneously you can use them, but sustainable use. So that's why the answer is simply D. See, don't mug up. No need to mug up at all. If you know all what to know in Ramsar is that Ramsar एक intergovernmental treaty, national action and international cooperation, and third thing is wise use. That is what 3 pillars की भी जरूरत है, number of sites वगैरह का भी जरूरत है, and COPs का भी जरूरत है. This is the main point that you need to remember. Next we will see what is Montreux record. Montreux record is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance. Wetlands of international importance means Ramsar list. उन्हीं लिस्ट में से एक सबसेट है ये, which are more in danger. For example, Ramsar list is like a hospital patients. There are many patients in the hospital, but Montreux record is ICU. Out of them, some patients might be in ICU, like that. So Montreux record ज्यादा खराब हो गया, wetlands ज्यादा danger में है, उनको record है वे. इसका it is a subset of Ramsar list. But how do you decide whether they are खराब है या नहीं? कैसा decide करेंगे? The keyword here is ecological character. The keyword is here ecological character have occurred, changes in ecological character have occurred, are occurring, or are likely to occur. अगर ecological character ही change हो रहा है या change हो चुका है या होने वाला है, then you keep it in Ramsar Montreux record. So the Montreux record is a register of wetland sites on the list of wetlands of international importance where changes in ecological character have occurred, are occurring, are likely to occur as a result of technological development, pollution, or other human interference. See, don't mug up the definition. Simple. It is part of Ramsar list. Keyword 1. Keyword 2 is changes in ecological character have occurred, are occurring, or likely to occur. 3, it could be for any reason. It could be because of technological development or pollution or other human interference, doesn't matter. So the reason is not matter. It is a subset of Ramsar list. And how do we decide?
with the change in the ecological character. So the main keyword is change in the ecological character. And total 51 sites are there in the world. This number keeps changing. No need to mug up this number, but approximate idea rakhe. As I told you, maybe Ramsar and Montreux can be interchanged. There could be a statement in the exam. There are 2231 Montreux record sites, whereas only 51 sites are listed under Ramsar. ऐसा दे सकता है इंटरचेंज करके देगा, बट ये नहीं पूछेगा 2231 के जगह 2241. डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आता एग्जाम में. So 51 sites are there in the world and it is established in 1990 COP. जब 1990 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मिला है उस साल वे डिसीजन लिया है मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड मेंटेन करने का, बट नो नीड टू मग अप, जस्ट एक आइडिया के लिए मैं बता रहा हूं. एंड इंडिया से दो है इसमें, वन इज केलाडियो नेशनल पार्क राजस्थान में है, सेकंड इज लोकताक लेक मणिपुर में है. सो दीज आर टू वेटलैंड्स फ्रॉम इंडिया विच आर अंडर मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. So Montreux record क्या है? A part of Ramsar list where changes in ecological character have occurred, are occurring, are about to occur. And 1990 COP में एक कंसेप्ट लिया गया है. एंड 51 साइट्स है वर्ल्ड में, इंडिया से दो है, वे क्या है? केलाडियो नेशनल पार्क इन राजस्थान एंड लोकताक लेक इन मणिपुर. दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट. Let's take a question which was asked. If a wetland of international importance is brought under the Montreux record, what does it imply? Asked in 2014. How silly question, direct question. What does it imply? Why, when we bring a wetland of international importance into Montreux record? Because ecological character occur हुआ है या change हुआ है और change हो रहा है और होने वाला है. Option A. Changes in ecological character have occurred, are occurring, or likely to occur in the wetland as a result of human interference. Directly it is given, no twist. Even no need to look at the other options. Otherwise, if you see also, you will find it very funny. Option B. The country in which the wetland is located should enact a law to prohibit any human activity within 5 kilometers from the edge of the wetland. वे वैसा बनाया है, कोई meaningless meaning नहीं इसमें. The survival of the wetland depends on the cultural practices. What are cultural practices? D. It is given the status of World Heritage Site. World Heritage Site की कहाँ से बात हो रहा है? So directly the answer is A. Very silly direct question. So just remember these keywords. Next, what is Wetland International? Just इतना याद रखिए, Wetland International is an NGO. It is not any intergovernmental organization. It is just an NGO. Of course, governments also could be members of an NGO, right? It could be any members, governments or maybe some other NGOs or all. We don't bother about it. बस इतना याद रखिए, it is an NGO. कोई भी NGO क्या करता है? It goes to field level and their expertise and their knowledge, it mobilizes their knowledge and use the practical experience to advocate for better policies. वे field level पे जाके लोगों को समझा के कुछ कंजर्व करने का कोशिश करता है. NGO का काम ही ये होता है. Whereas intergovernmental treaty में क्या होता है? Nation will pass an action and internationally there will be cooperation because that is with the governments. National action and international cooperation. So हर चीज में मगअप करने की जरूरत नहीं. आपको इतना याद रखना कौन सी NGO है, कौन सी intergovernmental organization है. उसके बाद आपको खुद पता चलेगा. Any NGO will go to field level and mobilize knowledge and create awareness and work for better policy. ऐसा स्टेटमेंट आता है तो बिना कुछ सोच के आप सही बोल सकते हैं. ओके, सो इतना याद रखें, दो कीवर्ड्स है. वेटलैंड इंटरनेशनल एक एनजीओ है, सेकंड वे फील्ड लेवल पे जाके लोकल पीपल के साथ मिलके कुछ अच्छा के लिए काम करेगा. इतना बहुत है. यू नीड नॉट नो ऑल दीज, आई एम जस्ट गिविंग फॉर माई सेटिस्फैक्शन. वे कहीं एग्जाम में नहीं पूछने वाला, आप याद रख के कंफ्यूज मत हो जाइए. बेस्ड मोस्टली इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, जनरली इसका ऑफिसेस मेनली डेवलपिंग कंट्रीज में है बिकॉज वहां ज्यादा जरूरत है. इट हैज 20 रीजनल, नेशनल और प्रोजेक्ट ऑफिसेस इन ऑल कंटिनेंट्स. हेड ऑफिस इन ईद, नेदरलैंड्स में हेड ऑफिस है. वे कहीं नहीं पूछेगा वेटलैंड इंटरनेशनल का हेड ऑफिस कहां पे है, कहां पे है तो आपको क्या लेना देना है. ये तो जस्ट एक एनजीओ है, उसका हेड ऑफिस को कहां है हम क्यों याद रखेंगे. बट इतना याद रखेंगे वेटलैंड इंटरनेशनल है क्या. अगर ये भी नहीं पता होगा तो दैट इज समथिंग रॉन्ग. एंड सिमिलरली वे क्या करता है, हमको ये इंपॉर्टेंट नहीं है उनका हेड ऑफिस कहां पे है, कितना ऑफिसेस है, उसका कितना ब्रांचेस है, कितना एम्प्लॉयज है, हम नहीं पढ़ने को बैठा है ये सारे. जस्ट एक आइडिया के लिए मैंने बताया. डोंट मग अप एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट लीव इट.
इसकी शुरुआत कैसा हुआ वे भी मैं बताऊंगा. जस्ट लिसन एंड फॉरगेट, डोंट रिमेंबर, नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 1937 में एक ऑर्गेनाइजेशन, एक एनजीओ फॉर्म हुआ है. दैट नेम वाज इंटरनेशनल वाइल्ड फोल इंक्वायरी. इसका मेन पर्पस है वाटर बर्ड्स को प्रोटेक्ट करना. इंटरनेशनल वाइल्ड फोल इंक्वायरी वाज एस्टैब्लिश्ड और फाउंडेड इन 1937 एंड दिस organization was focused on the protection of water birds. बाद में they changed the name to International Waterfowl and Wetlands Research Bureau. See, neither you are, don't try to note down these words or don't try to remember. ये इंटरनेशनल वाटरफॉल एंड वेटलैंड रिसर्च ब्यूरो है और कुछ और नाम है, मुझे क्या लेना देना है. आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस. मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जस्ट इन इतना भी नहीं बताएंगे तो हम 16 दिन भी नहीं लगेगा, हमको 8 दिन में खत्म हो जाएगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा. इसलिए मैं खींचने के लिए थोड़ा और ऐड किया हूँ, अदरवाइज एग्जाम में कोई काम का नहीं. सो बाद में नेम चेंज किया है. देन द स्कोप बिकम वाइडर, नॉट ओनली द वाटर बर्ड्स, नाउ दे स्टार्टेड प्रोटेक्टिंग वेटलैंड एरियाज आल्सो. बाद में सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस वर एस्टैब्लिश्ड इन एशिया एंड अमेरिका. One was Asian Wetland Bureau, no need to remember the name at all. Similarly, Wetlands for Americas. 2 more similar organizations were established. Since all are working in the same field, they started working together. In 1991, the 3 organizations started to work closely together, but we are not interested. Finally, in 1995, all the 3 organizations merged into one, and that is Wetland International. So, ज़्यादा से ज़्यादा याद रखेंगे तो क्या याद रखेंगे? Wetland International 1995 में establish किया गया है by merging some other organizations which were existing at that time. That's it. Let me summarize. Montreux record में हमने क्या देखा? 1. This is register of wetlands under Ramsar list, whose ecological character has changed, changing, or about to change. Ecological character is the keyword. Okay, change in ecological character is the keyword. It was announced in 1990 COP. ये कब adopt किया है Montreux record को? 1990 में. Then why I am saying 1990, though it will not be asked, but suppose एक क्वेश्चन होता है, Montreux record is recently adopted under Ramsar list. ऐसा स्टेटमेंट देता है, आपको इतना पता चलेगा इट इज नॉट रिसेंटली अडॉप्टेड. इसलिए मैं बता रहा हूं, ऐसा नहीं एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन ऐसा नहीं पूछेगा कौन सी साल में अडॉप्ट किया है. The nature will be broad in the exam. The statements that will be asked are broad in nature. So आपको automatically समझ में आएगा. Similarly, why I am saying 51 sites? It will not be asked. Montreux record के अंदर कितने sites है वे directly नहीं पूछेगा. But there could be an interchange or some kind of thing. That's why I am just with back of the mind आपको रह जाएंगे. कोई आपको special effort रखने का जरूरत नहीं इस पे. जिस पे रखना है जो मैं बता रहा हूं उसको दोबारा रिवाइज करिए. इसको जस्ट एक बार सुनिए, वैसा तो मैं रिवाइज कर ही रहा हूं इसको भी. देन इंडिया से 2 है. 1 इज केलाडियो नेशनल पार्क इन राजस्थान, 2 लोकताक लेक इन मणिपुर. व्हाट इज वेटलैंड इंटरनेशनल? इट इज एन एनजीओ. सो ऑब्वियसली एनजीओ होगा तो क्या करेगा? इट वर्क्स एट फील्ड लेवल विथ लोकल पीपल टू डेवलप एंड मोबिलाइज नॉलेज. And it was established in 1995 and headquarters in Netherlands. ज्यादा से ज्यादा याद रखेंगे तो इतना. Even established कब हुआ और headquarters कहां पे, आपको जरूरत ही नहीं. मैंने सिर्फ एक satisfaction के लिए बोल रहा हूं. Getting me? Let's see a question. That's what I am saying. Try to understand me. Exactly, you need to catch the nerve of the paper setter. You need not learn each and everything. You do not require, because you are going to be an officer, not going to be a researcher or something. So, with reference to a conservation organization called Wetland International, which of the following statement is are correct? How silly statements you will understand if you get the keywords. It is an intergovernmental organization. The keyword is NGO. It is not intergovernmental organization. So, first is wrong. So, how we are going is not by mugging up. If you mug up, आप 10 कुछ इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी याद रखेंगे, कुछ एनजीओस भी, आप कंफ्यूज हो जाएंगे. सो मगअप नहीं करना, आपको बताना चाहिए किस तरह में क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट दिया जाता है, अकॉर्डिंगली आपको माइंड में रखना है. सो इट इज एन एनजीओ, नॉट एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग. Second, it works at the field level to develop and mobilize knowledge and use the practical experience to advocate for better policies. Yes, any NGO work in this way. This is correct. So second is correct. First is wrong. So the answer is B. Very silly questions come in the exam. Trust me.
नेक्स्ट पॉइंट, नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम। वे आपका प्रीलिम्स का कोई काम का नहीं है, जस्ट फॉर माय सेटिस्फैक्शन आई एम टेलिंग यू। सो इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है इन द ईयर 1985-86। इसी इतना माइंड में रखिए, 3 कीवर्ड्स। वन इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्लोज कोलैबोरेशन विथ कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स। पॉइंट नंबर 1 क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन क्लोज कोलैबोरेशन विथ स्टेट गवर्नमेंट्स ऑपरेशनलाइज दिस program, national wetland. See, government of India operationalized national wetland conservation program in close collaboration with concerned state governments during the year 1985-86. Under this program, 115 wetlands have been identified till now by the ministry, which requires urgent conservation and management initiatives. डोंट मगअप, कोई काम का नहीं, ज्यादा से ज्यादा माइंड में रखना भी होता है। इतना माइंड में रखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट, बिकॉज लैंड इज ए स्टेट सब्जेक्ट. So when you are doing something which is related to that, so you have to be in association with the concerned state government. And year was 85-86, not recently. And third is how many wetlands are identified? 115. कहीं नहीं पूछने वाला, जस्ट एक सेटिस्फैक्शन के लिए देख लिया हमने, इससे ज्यादा कुछ नहीं. What is the aim of the scheme? Obviously, you know, the aim is wise use, conservation and wise use. So conservation and wise use of wetlands is the main aim of the scheme. वे तो ऑलरेडी आप जानते हैं. So what are the objectives? No need to mug up. One is to lay down policy guidelines for conservation and management. कैसा कंजर्व करेंगे? पॉलिसी गाइडलाइंस बनाना चाहिए पहले. फर्स्ट प्रिपेयर पॉलिसी गाइडलाइंस, हाउ टू कंजर्व. सेकेंड, टू अंडरटेक इंटेंसिव कंजर्वेशन मेजर्स. पहले गाइडलाइंस बनाइए, सेकेंड इंटेंसिव मेजर्स लीजिए, थर्ड मॉनिटर करिए उसको, टू मॉनिटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम. मेजर्स वगैरह लेना है तो मॉनिटर भी करना है ना उसको, कैसा चल रहा है. फाइनली मेक एन इन्वेंटरी, प्रिपेयर एन इन्वेंटरी ऑफ इंडियन वेटलैंड्स. नो नीड टू मग अप, डोंट वेस्ट योर टाइम, इवन डोंट सेकंड टाइम रीडिंग भी नहीं चाहिए आपको. एक बार सुन लिया, याद होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, क्योंकि हमको कोई जरूरत नहीं इससे, सिंपली फॉरगेट. बट समझ तो आ रहा है, कंटिन्यूटी में आपको तो मीनिंग तो समझ में आ रहा है, बस इतना चाहिए आपको. So what we have seen, what is NWCP, National Wetland Conservation Program? It is Government of India in collaboration with state governments. कब आया? 85-86 में. एंड कितने आइडेंटिफाई किया अभी तक वेटलैंड्स को? 115. नो नीड टू मगअप, जस्ट एक बार सुन लिया. व्हाट इज द एम? वाइज यूज एंड कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स. एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? पॉलिसी गाइडलाइंस बनाना है, देन कंजर्वेशन मेजर्स लेना है, देन मॉनिटर करना है उसको, फाइनली इन्वेंटरी ऑफ वेटलैंड्स बनाना है. सो दिस इज अबाउट नेशनल वेटलैंड कंजर्वेशन प्रोग्राम. Last concept of this topic is important wetlands in India. This is very very important concept. अगर क्वेश्चन आता है तो 90% ऑफ टाइम्स इसी पे क्वेश्चन आने का चांस ज्यादा है. सो ये ज्यादा अपने ध्यान से देखना है. पहले कुछ फैक्ट्स देखते हैं. इंडिया में वेटलैंड्स 4.7% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. नो नीड टू एग्जैक्टली मगअप, बट एक आइडिया के लिए 4.7% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री आर वेटलैंड्स. अगर पैडी फील्ड्स को भी इंक्लूड करेंगे, बिकॉज पैडी फील्ड्स आर आल्सो वेटलैंड्स, बिकॉज उसपे भी टेम्पररी वाटर होता है, राइट. सो देन इट विल बी 18% ऑफ द एरिया इंक्लूडिंग पैडी फील्ड्स. So 4.7% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया. डोंट मगअप 4.7 4.7 4.7 ऐसा करके मगअप मत करिए, कोई काम का नहीं. 18% इंक्लूडिंग पैडी फील्ड्स. इसरो ने एक डिटेल्ड इन्वेंटरी बनाया है. ये एक पूरा उसका देख के कंप्लीट आइडिया दिया है उसके बारे में. विद दिस हमको ये पता चला कुछ फैक्ट्स. टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ कोस्टल वेटलैंड्स इज मोर देन और लार्जर देन दैट ऑफ इनलैंड वेटलैंड्स. इंपॉर्टेंट. सो कोस्टल वेटलैंड्स का एरिया इनलैंड वेटलैंड्स से ज्यादा है, बिकॉज कोस्टल वेटलैंड्स बड़ी बड़ी होता है. सो कोस्टल वेटलैंड्स आर larger in area compared to inland wetland. Point number 1, important. Point number 2, very important. Gujarat has highest proportion of area as wetlands. 17.5% of geographical area of Gujarat is wetlands. Because you know Gulf of Kambad, Gulf of Kutch, उसके वजह से गुजरात में
वेटलैंड्स सबसे कौन सी स्टेट हैज मैक्सिमम पोर्शन ऑफ एरिया एज वेटलैंड्स? गुजरात। एंड सबसे कम मिजोरम, ओनली 0.66%। परसेंटेजेस याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको बताना चाहिए हाईएस्ट इन विच स्टेट? गुजरात। लोएस्ट इन मिजोरम, इतना तो आपको बताना चाहिए। अगर यूटी की बात करें, लक्षद्वीप हैज हाईएस्ट प्रोपोर्शन, 96% ऑफ एरिया इन लक्षद्वीप इज वेटलैंड्स ओनली, बिकॉज लक्षद्वीप सारे कोरल रीफ्स है, कोरल रीफ्स कम अंडर वेटलैंड्स, सो दैट्स व्हाई लक्षद्वीप 96%। एंड चंडीगढ़ इज द लीस्ट, दैट इज 3%। चंडीगढ़ में तो सुखना लेक के अलावा क्या है? सो वेरी सिंपल, Gujarat highest, Mizoram lowest, Lakshadweep highest, Chandigarh lowest, and total area of coastal wetlands is larger than that of inland wetlands. These are three important points, keep in mind. After that, important wetlands की बात करें, Wular Lake in J&K. Wular Lake in J&K is important because Jhelum River passes through this lake. See, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है, सिली क्वेश्चन पूछ सकता है, Wular Lake कौन सी स्टेट में है? जनरल ऐसा क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में आता है। और 3 लेक्स देगा कॉलम ए में, कॉलम बी में 3 स्टेट्स देगा और पूछेगा विच ऑफ द अबव इज करेक्टली मैच्ड और इनकरेक्टली मैच्ड। और हो सकता है 4 लेक्स देगा, 4 रिवर्स देगा जो उस लेक के थ्रू जा रहा है और मैच करो, ऐसा भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। सो दैट्स व्हाई इतना याद रखें, वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है और झीलम रिवर इसके थ्रू जाएगी, वुलर लेक के थ्रू। सो मोरेरी, ये भी जम्मू कश्मीर में है। इट इज द लार्जेस्ट ऑफ द हाई आल्टीट्यूड लेक्स। हाई आल्टीट्यूड लेक का मतलब पर्टिकुलर हाइट से ज्यादा हाइट में होता है वे लेक, उसको हाई आल्टीट्यूड लेक बोलेंगे। कितना हाइट से ज्यादा होगा तो बोलेंगे हमको कोई लेना देना नहीं, जस्ट हाई आल्टीट्यूड लेक माइंड में रखना। सो इट इज द हाई आल्टीट्यूड लेक विच इज कंप्लीटली इन इंडिया, इट इज द लार्जेस्ट out of all those high altitude lakes in India. So it is at a height of 4500 meters, but no need to remember. Okay, at an altitude of 4522 meters, don't remember it. So Morari Jammu Kashmir में है. Okay, high altitude lakes में which are in entirely in India, it is the largest. Next है Pong Dam Lake, also called as Maharana Pratap Sagar, which is in Himachal Pradesh, which was built on Byas River. Very important. Pong Dam Lake is built on which river? Byas River. सतलुज ऐसा रिवर्स लेके कंफ्यूज करेगा, ब्यास इज आंसर, एंड वे हिमाचल प्रदेश में है। इसको महाराणा प्रताप सागर भी बोलेंगे। हारिके लेक, ये पंजाब में है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास रिवर एंड सतलुज रिवर। ब्यास एंड सतलुज जहां मिलता है वहां ये लेक है। सो हारिके लेक इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज रिवर एंड इट इज इन पंजाब। ये भी दे सकता है, हारिके लेक दे दिया और कॉलम बी में कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स, ये ऐसा मैच करो। सो वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड्स दी जा रही, इसको याद रखना आपने। सी जो इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने बताया, मैंने ये भी बताया, मैंने जस्ट एक सेटिस्फैक्शन के लिए पढ़ा रहा हूं, आपको याद रखने की जरूरत नहीं। जो इंपॉर्टेंट है उसको याद रखना चाहिए आपको, भी याद भी हो जाएगा, मैं समरी में आपको करवाऊंगा। देन केलाडियो नेशनल पार्क, वे राजस्थान में है। इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज इनटू मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, ये 1990 से मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में है बिकॉज ऑफ वाटर शॉर्टेज, इसके लिए इसको मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। सो केलाडियो नेशनल पार्क इज इन राजस्थान, इट इज इनटू मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड। नेक्स्ट इज सांबर लेक। सांबर लेक इज इन राजस्थान, विच इज द लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड। सारे इनलैंड वेटलैंड्स में सबसे बड़ा है एंड मोर ओवर इट इज सेलाइन वेटलैंड, लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड एंड इट इज सेलाइन एंड इट इज नोन फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन, in fact highest production of salt in all lakes. So salt water lake and largest inland wetland राजस्थान में है। नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट लोकताक लेक, ये मणिपुर में है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 रीजन्स। वन रीजन इट इज इनटू मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड, सेकंड इज इसके अंदर लेक के अंदर एक यूनिक फ्लोटिंग वेजिटेशन है, वर्ल्ड में ऐसा कहीं नहीं है। सो फ्लोटिंग वेजिटेशन, so which lake has unique floating vegetation in the world? That is Loktak Lake, and that is declared as a national park. That name is Kibul Lamjao National Park. So Kibul Lamjao National Park is inside Loktak Lake. Kibul Lamjao National Park, unique floating vegetation and Montrix record, and it is home to Sangai deer. Sangai deer is found only in this Kibul Lamjao National Park.
So Montreux record, Kibul Lamjau National Park, unique floating vegetation, Sangai deer. पिक्चर देख के माइंड में रखिए, मणिपुर में है. नेक्स्ट भितरकनिका. भितरकनिका इज इन ओडिशा. इट इज इंपॉर्टेंट फॉर 3 रीजन्स अगेन. वन इज इट इज सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव. सबसे बड़ा मैंग्रोव है इंडिया में सुंदरबंस. इनफैक्ट इट इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आल्सो. वे बाद में देखेंगे. ये सेकेंड लार्जेस्ट इन इंडिया भितरकनिका मैंग्रोव. सेकेंड है, इसके थ्रू 2 रिवर्स जाता है. वन इज ब्राह्मणी, second is Baitarni. So this is formed by 2 river deltas, Brahmani and Baitarni. And third, it is known for saltwater crocodiles, olive ridley turtles and gharial. So यहाँ gharial is also a kind of crocodile. Saltwater crocodiles, olive ridley turtles वे आप देख सकते हैं. So दिस इज अबाउट भितरकनिका, उड़ीसा में है. नेक्स्ट इज चिल्का लेक. चिल्का लेक इज ऑल्सो इन ओडिशा. इट इज द लार्जेस्ट लेक. चाहे कोस्टल, इट इज ऑफकोर्स इट इज ए कोस्टल लेक, बट कोस्टल में, इनलैंड में, सभी में लार्जेस्ट है. लार्जेस्ट इनलैंड बोलेगा तो सांबार, लार्जेस्ट कोस्टल बोलेगा या लार्जेस्ट लेक बोलेगा तो भी चिल्का लेक ओवरऑल में लार्जेस्ट है. ऑफकोर्स इट इज कोस्टल लेक एंड इट इज ऑल्सो साल्ट वाटर लेक. Getting Chilka Lake is in Odisha. It is the largest lake. It is a coastal lake and saltwater lake. And only Irrawaddy dolphins in India you find in this place. So it is home to the only known population of Irrawaddy dolphins in India. Irrawaddy river. ये Irrawaddy dolphins सिर्फ इस लेक में आपको मिलेगा. So बस इतना माइंड में रखे. So saltwater lake, coastal lake, and it is the largest lake. It is Odisha में है. And third is Irrawaddy dolphins यहां मिलता है. And it was also into Montreux record. It was also placed, added to Montreux record in 1993, but was removed later. बाद में रिकवर कर दिया. So then it was removed. बस इतना माइंड में रखे. ये भी एक टाइम पे Montreux record में था, but now removed. अगर छोटी एग्जाम में पूछता है which lake was added to Montreux record, but with the local people support, it became better and removed from the list. द आंसर इज चिल्का लेक. ऐसा क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, बट सेफ साइड में बता रहा हूं. ओके, चिल्का लेक ओडिशा में है. लार्जेस्ट लेक है, कोस्टल लेक, सैलाइन वाटर लेक है एंड इरावाडी डॉल्फिन्स का होम है. एंड इट इज वाज वंस इनटू मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, नाउ रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट. ओके, नेक्स्ट कोल्लेरू लेक. कोल्लेरू लेक है आंध्र प्रदेश में. इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. अब तक हमने लार्जेस्ट लेक्स 2 देखा. कोस्टल में या ओवरऑल में लार्जेस्ट है चिल्का, बट इट इज साल्ट वाटर लेक. सिमिलरली इनलैंड में सबसे बड़ा है सांबर. इट इज आल्सो साल्ट वाटर लेक. सो कोल्लेरू लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. फ्रेश वाटर में सबसे बड़ा है. ये यूपी में है. नेक्स्ट पॉइंट कैलिमर और केप कैलिमर तमिलनाडु में है. It is for 3 points you keep in mind. One is it is the apex of Kaveri River Delta. Second, a historical Chola lighthouse, of course, which was destroyed in tsunami 2004 का tsunami में, but Chola lighthouse you find here. And third is the forest around this lake is called Vedaranyam forest. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट सेफ साइड एक माइंड में रखिए. पॉइंट कैलिमर और केप कैलिमर तमिलनाडु में है. एपेक्स ऑफ कावेरी रिवर डेल्टा, चोला लाइट हाउस है एंड द फॉरेस्ट अराउंड दिस लेक इज कॉल्ड वेदारण्यम फॉरेस्ट. ओके, ये सब जरूरत नहीं, बट अगर कहीं पॉइंट कैलिमर कौन सी स्टेट में है इतना ज्यादा याद रखिए. तमिलनाडु, कावेरी, चोला लाइट हाउस, वेदारण्यम, आपका मर्जी. वे तो वैसा तो ऑटोमेटिकली याद हो ही जाएगा. Next, it is very important, Vembanad Lake or Vembanad Coal Lake. It is in Kerala. Vembanad Lake is in Kerala. One reason why we have to remember this, it is the longest lake in India. Longest, बहुत लंबा है. And you know the Kochi port was built on Wellington Island. ये even last year 2016 में NDA या CDS में पूछा था. एक स्टेटमेंट दिया था, कोची पोर्ट वाज बिल्ट ऑन वेलिंगटन आइलैंड. यस, इट इज करेक्ट. कोची पोर्ट वाज बिल्ट ऑन वेलिंगटन आइलैंड. एंड ये वेलिंगटन आइलैंड कहां से बना है? इट इज नथिंग बट वेम्बनाड एंड अरेबियन सी का आइलैंड है. सो वेलिंगटन आइलैंड इज फॉर्म्ड बाय वेम्बनाड लेक एंड अरेबियन सी, एंड ऑन दैट आइलैंड कोची पोर्ट इज देयर.
and Vemanad is the longest lake. And third is National Waterway 3 passes through this lake. National Waterway 3 passes through Vemanad Lake. So that's why you remember these three very important thing. Vemanad Lake is in Kerala. It is the longest lake. Kochi Port was on Wellington Island, which is nothing but Vemanad Lake and Arabian Sea Island. And National Waterway 3 passes through Vemanad Lake. Next is Ashtamudi Wetland. ये भी केरला में है. It is important again for three reasons. One is National Waterway 3 passes through this also. इसी नेशनल वाटरवे 3 क्या है? अष्टमुड़ी, वेम्बनाड, ये सबको कनेक्ट करते करते बनाया है. सो नेशनल वाटरवे 3 passes through अष्टमुड़ी वेटलैंड and वेम्बनाड वेटलैंड. रिवर कलाड रिवर drains into it and it forms an estuary with the sea at Neendkar. Neendkar is a place where it forms an estuary with the sea. So Neendkar estuary, Ashtamudi wetland. River Kallad drains into Ashtamudi wetland. National Waterway 3 passes through Ashtamudi wetland also. So you remember these three. Next, Sastamkotta Lake. Sastamkotta Lake is in Kerala again. See, this point is not very important. Just इतना माइंड में रखें, Sastamkotta Lake केरला में है. ये जरूरत नहीं. Otherwise, it is very important lake for Kerala because ये कोल्लाम का fresh water lake है and वे जो drinking water needs फुलफिल करता है. ये नहीं पूछेगा कौन सी लेक ड्रिंकिंग वाटर नीड को फुलफिल करता है ऑफ कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट, ऐसा कहीं नहीं आएगा. जस्ट आई वुड लाइक टू ऐड फॉर माय सेटिस्फैक्शन एक आपको आइडिया दे रहा हूं. इट मीट्स द ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ 500,000 पीपल ऑफ कोल्लाम डिस्ट्रिक्ट. सो सस्तमकोट्टा लेक इज आल्सो इन केरला. बस इतना माइंड में रखिए. Now let us see some other lakes which are not very important. They generally don't come in the exam, but just एक idea के लिए हम ये भी देख लेंगे. Like Surinsar Mansar Lake. Surinsar Mansar in J&K, जम्मू के आसपास. Anchar and Dal lakes are in Srinagar, J&K. So Anchar Lake, Dal Lake Srinagar में है. Surinsar Mansar Lake is in Jammu. These are in Jammu Kashmir. Chandratal in Himachal Pradesh. Similarly, Renuka also is in Himachal Pradesh. Chandratal and Renuka, just एक मैप को माइंड में रखिए. ये पूछने का चांस बहुत कम है. जनरली स्टेट एग्जाम्स में आता है, यूपीपीएससी, यूकेपीएससी ऐसा कहीं पूछ सकता है. अदरवाइज नो नीड टू टेक टू सीरियसली. अंचर दाल श्रीनगर ऊपर, सुरिनसर मानसर J&K जम्मू, चंद्रताल हिमाचल प्रदेश, रेणुका हिमाचल प्रदेश, रुद्रसागर त्रिपुरा, नक्की राजस्थान. गांधी जी का एशेश्वर इसमें मिलाया है नक्की लेक में. सो नो नीड टू रिमेंबर, कहीं नहीं आएगा, बस इतना माइंड में रखिए. नक्की लेक राजस्थान में है. नल सरोवर गुजरात में है. सिमिलरली साउथ की बात करें, पुलिकाट लेक एपी में तमिलनाडु में है. 95% एपी में है, 5% तमिलनाडु में भी है. श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन दैट इज ऑन द आइलैंड बिटवीन पुलिकाट लेक एंड बे ऑफ बंगाल. So Pulicat Lake, it is the second largest saltwater lake है ये, second largest, but no need to remember all this. Sriharikota mind में रखिए. Now let me summarize what all we have seen. Wetlands 4.7% of geographical area occupy करता है, अगर including paddy fields 18%. Total geographical area of coastal wetlands is larger than that of inland wetlands. गुजरात सबसे ज्यादा प्रोपोर्शन है, देन सबसे कम मिजोरम है. यूटीज की बात करें, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा है, चंडीगढ़ सबसे कम है. ये पॉइंट्स देखा है. उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन सी वेटलैंड्स देखा? वुलार लेक देखा जम्मू के कश्मीर में, एक झीलम रिवर इसके थ्रू जा रहा है. सोमवर्री देखा J&K में, ये हाई आल्टीट्यूड लेक्स में लार्जेस्ट है, विच इज एंटायरली इन इंडिया. मैप के थ्रू ये पिक्चर ये फिगर इमेज माइंड में रखिए, देन यू कैन इजीली आंसर. देन पोंग डैम और महाराणा प्रताप सागर देखा हिमाचल प्रदेश में, वे क्या है? ये ब्यास रिवर पे बनाया है. देन पंजाब में हारिके लेक देखा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ सतलुज एंड ब्यास रिवर्स. देन हम केलाडियो नेशनल पार्क देखा है राजस्थान में, इट इज इनटू मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड. देन हमने सांबर लेक देखा है राजस्थान में, इट इज द लार्जेस्ट इनलैंड वेटलैंड, इट इज ए सैलाइन वेटलैंड आल्सो, इट इज नोन फॉर सॉल्ट प्रोडक्शन आल्सो. देन
लोकताक लेक देखा है मणिपुर में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भी है। कीबुल लमजाओ नेशनल पार्क इनसाइड ऑफ दिस लेक है, फ्लोटिंग वेजिटेशन है, यहाँ वर्ल्ड में यूनिक है, एंड संगाई डेयर सिर्फ यहाँ दिखता है, राइट। देन भितरकनिका मैंग्रोव्स देखा ओडिशा में, इसका इंपॉर्टेंस क्या, सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव है। देन ब्राह्मणी बैतरनी रिवर डेल्टा से बना है, एंड साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, ऑलिव रिडली टर्टल्स एंड घड़ियाल। देन चिल्का लेक देखा है ओडिशा में, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, लार्जेस्ट लेक है, इट इज ए कोस्टल एंड सेलेन, ओवरऑल आल्सो लार्जेस्ट। इरावाडी डॉल्फिन यहाँ दिखता है। देन कोल्लेरू लेक देखा है एपी में, इंपॉर्टेंस क्या है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ओके। कहीं कहीं एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है, कोल्लेरू लेक को कृष्णा रिवर के साथ जोड़ता है, बट यू सी इट इज नथिंग टू डू विथ कृष्णा रिवर, इट इज बिटवीन कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स, बट ना कृष्णा रिवर इसके थ्रू जाता है ना गोदावरी रिवर इसके थ्रू जाता है। तो कहीं कोल्लेरू लेक एंड कृष्णा रिवर मैच करने को आता है, दे आर नॉट मैचेबल, ओके। सो देयर इज नथिंग टू डू विथ एनी रिवर, जस्ट कोल्लेरू लेक इंडिपेंडेंट है, वे एपी में है, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, इतना ही माइंड में रखिए। साउथ और डाउन साउथ जाएंगे तो पॉइंट कैलिमर देखा है, तमिलनाडु में है, यहाँ कावेरी डेल्टा में है, एंड छोला लाइट हाउस है, एंड वेद अरण्यम फॉरेस्ट बोलता है द फॉरेस्ट सराउंडिंग दिस लेक। देन वेम्बनाड लेक देखा केरला में, इट इज द लॉन्गेस्ट लेक, एंड कोच्चि पोर्ट वाज बिल्ट ऑन दिस लेक एंड on Wellington Island, which was formed between this lake and Arabian Sea, and National Waterway 3 passes through this. Then हमने देखा अष्टमुडी केरला में, सो इसके थ्रू भी नेशनल वाटरवे 3 जाएगी, एंड कोल्लाडा रिवर इसके थ्रू जा रहा है, इसमें ड्रेन हो रहा है, एंड नींदकार एस्टरी इज बीइंग फॉर्म्ड बाय दिस लेक, ओके। सो दीज आर ऑल व्हाट इंपॉर्टेंट वी हैव सीन। लेस इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, हमने देखा सुरिनसर मानसर इन जम्मू, अंचर एंड दाल इन कश्मीर, चंद्रताल इन हिमाचल, रेणुका इन हिमाचल। ये सिर्फ स्टेट्स तक याद रखे, नथिंग स्पेशल, स्पेशलिटी कुछ नहीं है, बट कौन सी स्टेट्स में है याद रखिए। ये भी छोटी एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, रेयर केस में। इफ यू कैन नॉट रिमेंबर फॉरगेट, यू आर नॉट गोइंग टू लूज एनीथिंग। रुद्रसागर इन त्रिपुरा, नक्की इन राजस्थान, नल सरोवर इन गुजरात, सस्तम कोट्टा इन केरला, पुलिकाट इन एपी and Telangana. So a second largest and Sriharkota. These are some other lakes. Now you see how questions come. There was a question with reference to the wetlands of India. Consider the following statements. The country's total geographical area under the category of wetlands is recorded more in Gujarat as compared to other states. है ना? In India, the total geographical area of coastal wetlands is larger than that of inland wetlands. ये भी सही है. Both statements are correct. नेक्स्ट 2014 में एक क्वेश्चन आया है, वेटलैंड्स एंड कॉन्फ्लुएंस ऑफ रिवर्स। हारिके वेटलैंड, कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्यास एंड सतलुज, विच इज करेक्ट। कीलाडियो गना नेशनल पार्क, वे हम देखेंगे बाद में, अदरवाइज कीलाडियो गना इज नथिंग टू डू विथ confluence of Banas and Chambal. In fact, at the confluence of Banas and Chambal, there is Ranthambore National Park, which we will see in the national parks topic. Kolleru Lake has nothing to do with Musi and Krishna, so only one is correct. If you feel that I am going fast, थोड़ा pause करके आप देख सकते हैं, otherwise it is very basic things. 2009 का क्वेश्चन, in India which one of the following state has the largest inland saline wetland? Largest inland wetland is in Rajasthan, that is Sambar Lake. Of course it is saline also, so that is Rajasthan. Which of the following national parks is unique in being a swamp with floating vegetation that supports a rich biodiversity? So floating vegetation means Loktak Lake, but he is asking the national park, that is Kibul Lamjao National Park inside this Loktak Lake. 2015 में पूछा है, बिल्कुल सिली क्वेश्चन। 2010 में पूछा है, which one of the following pairs is not correctly matched? गोविंद सागर, सतलुज। आपको वे रिवर सिस्टम में बताऊंगा। गोविंद सागर वाज बिल्ट ऑन सतलुज, इट इज नॉट एनी लेक, इट इज ए रिजर्वायर, इट इज ए प्रोजेक्ट, दैट्स व्हाई आई डिड नॉट टेल हियर, इट विल बी कवर्ड इन ड्रेनेज सिस्टम। कोल्लेरू लेक, कृष्णा इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कोल्लेरू हैज नथिंग टू डू विथ कृष्णा, दैट इज द आंसर। उकाई रिजर्वायर इज मेड ऑन तापी रिवर, अगेन आई विल सी इन ड्रेनेज सिस्टम। उलार लेक के थ्रू झीलम रिवर जाता है, इट इज ट्रू, विच वी हैव सीन। सो बी, यू बी केयरफुल, ही इज आस्किंग विच इज
not correctly matched, sometimes correctly matched, sometimes incorrectly or not correctly matched. You have to be careful while reading the statements. If you are not under pressure, you can read carefully and you can definitely clear the exam. If you just go under pressure, you are losing yourself, you are making नुकसान, आप खुद को नुकसान कर रहे हैं. So Kolleru Lake Krishna is wrong. Next 2011 का क्वेश्चन, two important rivers, one with its source in Jharkhand and known by a different name in Odisha, and another with its source in Odisha, merge at a place only a short distance from the coast of Bay of Bengal before flowing into the sea. This is an important site of wildlife and biodiversity and a protected area. Which one of the following could be this? ये सारे ड्रेनेज सिस्टम में पढ़ेंगे, ऑरिजिन झारखंड में हुआ या ओडिशा में हुआ वगैरह. अदरवाइज ही इज टॉकिंग ऑफ टू रिवर्स, ब्राह्मणी एंड बैतरनी, एंड वे ओडिशा की बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट एरिया. ही इज टॉकिंग ऑफ भितरकनिका मैंग्रोव्स. भितरकनिका के थ्रू ब्राह्मणी बैतरनी रिवर्स वे डेल्टास के बना है. गेटिंग मी? सो दिस इज ऑल अबाउट दिस. सो थैंक यू. I'm telling you again, if you really understand, this is the easiest exam. 15-16 दिन बहुत है इस एग्जाम को तैयारी करके क्लियर करने के लिए. ट्रस्ट मी.